Hi friends, welcome to everyone. आमे हमरो प्रीवियस वीडियो रे 2021 ने आसीथिबा TGT मैथ रो क्वेश्चन नंबर 1 रु 20 तक डिस्कशन करिथिले। एही वीडियो रे आजिरो एही वीडियो रे आमे क्वेश्चन नंबर 20 रु 30 तक डिस्कशन करिबा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21 कौन कहिछि the cost of 2 pen and 3 pencil is 46 and the cost of 3 pen and 5 pencil is 74. Find the total cost of 1 pen and 1 pencil. Suppose pen pine, for the pen we will use x and for the pencil we will use y. So given that the cost of 2 pen and 3 pencil is 46, that means the cost of 2 pen, that is 2x, and the cost of 3 pencil, that is 3y, which equals to 46. Again the cost of 3 pen, that is 3x, with the cost of 5 pencil, that is 5y, equals to 74. Then find the total cost of 1 pen and 1 pencil, that is we have to find out the value of x plus y. Clear? हमको 2x plus 3y equals to 46 देइछि, 3x plus 5y equals to 74 देइछि, हमको x plus y रो वैल्यू फाइंड आउट करिवार अछि। बर्तन लेट इट बी इक्वेशन 1, इट विल बी इक्वेशन 2। बर्तन इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करी हमें x एंड y रो वैल्यू कैलकुलेट करनबा, देन x plus y को इजीली फाइंड आउट करनबा। बर्तन को केमते सॉल्व करिबा? नाउ मल्टीप्लाइंग 3 in equation 1, how much we will get? That is 6x plus 9y equals to 138. Clear? Again multiplying 2 in equation 2, how much we will get? 3 2 is 6 plus 5 2 is 10, which equals to 148. Clear? Now subtracting equation 1 and 2, subtracting 2 from 1, how much we will get? It will be minus, so it will be minus 6 plus 6 will be cancelled out, 9y minus 10y, it will be minus y, which equals to minus 10, implies the value of y equals to 10. If the value of y equals to 10, then what will be the value of x? We can calculate the value of x from the equation 1, that is 2x plus 3 into y. In place of y I can write 10, which equals to 46, implies 2x equals to 46 minus 30, which equals to 16, implies x equals to 16 upon 2, that is 8. Hence we will get the value of x equals to 8 and the value of y equals to 10. Then हम कौन दरकार थिला? x plus y रो value, then x plus y will be 10 plus 8, which equals to 18. Hence 18 is our required answer, that is option 2 is the right answer. Clear? Now come to the next question, question number 22. Question number 22 कौन कहिछि? The quadratic polynomial whose sum of zeros is 6 and the product of zeros is minus 16, then find out the quadratic polynomial. ताले कौन कहिछि? Let the two zeros is, one is alpha and another is beta. Given that sum of two zeros is 6, that is we can write alpha plus beta equal to 6, and the product of zeros is minus 16, that is we can write alpha into beta equals to minus 16. Clear? तो alpha plus beta हमको given अछि, alpha into beta into given अछि, ताले हमको quadratic polynomial find out करिया अछि। आमे जानिछु यदि alpha plus beta एवं alpha into beta given अछि, then the required quadratic form is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Then कौन होबा आंसर? x square minus alpha plus beta जगह केते पुट करबा 6 into x plus alpha beta जगह केते पुट करिया minus 16, so it will be minus 16, which equals to 0. Hence option 3 is the right answer. Clear? तो हमारा required quadratic polynomial केते हिजवा x square minus 6x minus 16, that is option 3 is the right answer. Clear? Now come to the question number 23. Question number 23 कौन कहिछि? गोटे मैट्रिक्स देछि A, तास तो मल्टीप्लाई हिछि गोटे मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23. से मैट्रिक्स रो ऑर्डर केते अछि बा साइज केते अछि? 2/3. एवं से A सहित मल्टीप्लिकेशन हैला परे हम केते बाय केते मैट्रिक्स देछि? गोटे 3/3 मैट्रिक्स देछि। yes or no? तो हमको पचाछि देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A, ए मैट्रिक्स A रो ऑर्डर एमती केते हेले जा सहित मल्टीप्लाई हेले ए मैट्रिक्स टी हमको दबो गोटे 3/3 मैट्रिक्स दबो। बर्तमान हम कोन करे छि? फाइंड द ऑर्डर ऑफ A. A रो ऑर्डर ता केते लिखिबा? जा सहित आ गोटे मैट्रिक्स लेटेड बी B रो ऑर्डर केते अछि? 2/3. तो
तो हमको गोटे रिजल्ट्स पाइछे मैट्रिक्स रिजल्ट्स केते आछि 3/3 ताले बर्तन एठी ए रो ऑर्डर केते हेले एठी पाइबा 3/3 ना दैट विल बी 3 क्रॉस 2 क्लियर कहना आमे जानछु जदि गोटे मैट्रिक्स ए हुए एवं अनदर गोटे मैट्रिक्स बी हुए दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी कन्फर्मेबल मींस ए और बी रो मैट्रिक्स रो मल्टीप्लिकेशन हे परिबो केतेबेले ना फर्स्ट मैट्रिक्स रो कॉलम सपोज एटा होची m क्रॉस n ए रो ऑर्डर होची m क्रॉस n बी रो ऑर्डर होची n क्रॉस p तन कोन होची a and b are two matrix are said to be conformable बा से दुटांकर प्रोडक्ट पॉसिबल केतेबेले फर्स्ट मैट्रिक्स रो कॉलम कहा सहित इक्वल हवा दरकार ना सेकंड मैट्रिक्स रो रो सहित इक्वल हवा दरकार फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम केते अछि n सेकंड मैट्रिक्स रो केते अछि n सो n हियर इक्वल आछि तनु ए मैट्रिक्स रो प्रोडक्ट केते आसीबो प्रोडक्ट जोटा भी आसीबो तार ऑर्डर केते आसीबो m क्रॉस p काने एठी n दुटा इक्वल अछि तो समानकर केते आसीबो m क्रॉस p बर्तन एठी केते आसी 3 क्रॉस 3 ताले बर्तन आमे जानिचु दुईटा मैट्रिक्स रो प्रोडक्ट केतले पॉसिबल ना तले सेकंड मैट्रिक्स रो रो फर्स्ट मैट्रिक्स रो कॉलम से इक्वल हवा कथा ताले फर्स्ट मैट्रिक्स रो कॉलम मस्ट बी इक्वल्स टू सो आई कैन राइट 2 हियर अगेन तो मैट्रिक्स ऑर्डर कितना चाहिए रिजल्ट मैट्रिक्स होते 3/3 सो इट विल बी 3 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3 क्लियर तो बेसिकली कौन कले ए मैट्रिक्स ऑर्डर हमको जाना नहीं एटा हमको फाइंड आउट करियर अछि बी मैट्रिक्स ऑर्डर दीची 2/3 रिजल्ट कितना आछि 3/3 तो हमें केतले पाइबा हमें जानछु दुईटा मैट्रिक्स रो प्रोडक्ट केतले पॉसिबल दले फर्स्ट मैट्रिक्स रो कॉलम सेकंड मैट्रिक्स रो रो जदि देंको समान हेले ताल प्रोडक्टटा पॉसिबल त माने आर कॉलमटा निश्चित भाବରେ हेतु केते 2 yes or no तो 2 2 हेले पॉसिबल हेले सिना मैट्रिक्स रो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल अगेन थिंग कछि तारो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रो ऑर्डर केते आछि 3/3 सो इट विल बी मस्ट 3 सो 2 2 आर फर्स्ट मैट्रिक्स रो कॉलम सेकंड मैट्रिक्स रो रो इक्वल आसीला ऑर्डर केते आसीबो 3 क्रॉस 3 काहे ना ठीक ऑर्डर केते आसला m क्रॉस m क्रॉस p सो इट विल आसीबो केते 3 क्रॉस 3 क्लियर hence option 3 is the right answer now come to the question number 24 question number 24 kon कहि if the value of a plus 1 by a equals to 8 then we have to find out the value of a plus a fourth plus 1 upon a to the power fourth यार वैल्यू हमको फाइंड आउट करर छै बर्तन ए क्वेश्चन को हम केमते अप्रोच करिबा गिवन कोन a plus 1 by a equals to 8 so if you will taking the square on both sides how much we will get a plus 1 by a ro square who equals to 64 which can be written as a square plus 1 by a square plus 2 equals to 62 implies we can write a square plus 1 by a square which equals to it will 64 not 62 64 minus 2 which equals to 62 clear if you take again the square if you taking again the square on both sides how much you will get it will be a fourth plus 1 by a fourth plus 2 into a square into 1 upon a square into 1 upon a square which equals to 62 रो square 62 रो square कितना है 4 6 दुने 12 दुने 24 24 4 1 2 636 2 और 3844 yes or no so 62 रो कितना 3844 implies इट कितना जो a fourth plus 1 by a fourth एटा कितना जो plus 2 क्योंकि कहेंगे ना a square will be cancel out which equals to 3844 हम कहार वैल्यू दरकार a fourth plus 1 by a fourth equals to 3844 minus 2 that is 3842 clear hence option 3 is the right answer हमें बेसिकली कौन करले फर्स्ट स्क्वायरिंग करनेले अगेन 2 टाइम्स स्क्वायर नेला पर हमें रिजल्ट्स पाइछिबा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन that is question number 25 कौन कहिछि 1 to the power 101 1 to the power 101 it will be 1 plus minus 1 to the power 50 it will be again 1 plus 1 to the power 25 again 1 minus 1 to the power q that is minus 1 so plus 1 minus 1 will be cancelled out answer is 2 clear next question that is question number 26 कौन कहिछि if y equals to 5 log x to the power x then find out dy upon dx okay we have to find out the value of dy by dx as we know a property log a to the power b equals to b log a yes or no that means I can write y equals to 5 log x to the power x which can be written as 5 into x log x clear yes or no बर्तन एटा हेगला हमर y दर पछर चिकन dy dx now taking derivative on both sides the left side केते जो dy by dx that is d dx of x log x 5x log x तो 5 टा कांस्टेंट बाहर को नहीं आसीबा डेरिवेटिव ऑफ x log x u into डेरिवेटिव v
plus v into derivative of u তাহলে কেতে আসিবো 5 कॉमन गले 1 plus log x clear hence option 1 is the right answer. Now come to the question number 27. Question number 27 kon koichi if the mean and median of a data is 28 and 20 then find out the mode. তাহলে median mean दे दीची mean के दीची mean देची 28 median देची केते md that is median के दीची 20 तो हमको कौन फाइंड आउट करे अछि मोड that is mo equals to question mark आमे गोटे प्रॉपर्टीज आमे गोटे फार्मूला जानचे कोन mod equals to 3md minus 2m एटा गोटे आमे फार्मूला जानचू mod equals to 3md minus 2m ताले हमको पचाची कोन mo पचाची ताले ताको फाइंड आउट करबे केते 3 into md जे केते 20 minus 2 into m that is 28 which equals to 220 into 3 23 is 60 minus 20 it will be 56 which equals to 4 hence mode will be 4 clear. Next question is 28 kon koichi the arithmetic mean and geometric mean of 1 and 9 is gote number dechi 1 another number dechi 9 so ei duta number arithmetic mean kete hijibo am equals to kete hijibo 1 plus 9 by 2 which equals to 10 by 2 which equals to 5 eta je tar arithmetic mean to geometric mean kete hijibo geometric mean equals to 9 into 1 ka root over so it will be root 9 that is 3 hence the arithmetic mean and geometric mean of 1 and 9 will be 5 and 3 that is option 1 is the right answer. Now come to the next question that is question number 29 kon achi y equals to e to the power 2x plus 1 eta given achi हमको कौन फाइंड आउट करियर अछि d square y upon dx square फाइंड आउट करिवर अछि ताले कोन करिबा taking derivative on both sides so dy by dx it will be 2 into e to the power 2x clear it has to dy dx again हमको कौन दरकार d square y by dx square that means d square y upon dx square which is nothing d dx of dy by dx that is derivative of what is dy dx here 2 into e to the power 2x that is 4 into e to the power tx clear 4 into e to the power 2x तो बर्तमान कोन करे फाइंड आउट करे छी d square y by dx square at x equals to 0 that means d square by dx square at x equals to 0 तो बर्तमान एटा कोन बाहरला मोर d square y by dx square yes or no at x equals to 0 means x जगह 0 पुट कर देता आंसर केते आसीबो 4 into e to the power 2 into 0 that is 0 so 4 into e to the power 0 जे केते आसीबो 4 into 1 that is 4 hence option 1 is the right answer. Next comes to the question number 30 जोटे आज last question number 30 कौन कहिचे equation of the straight line with slope 2 upon 3 and passing through the point 0 and 5 by 3 is आमे जनिछु equation of straight line when slope and one point is given that means slope point form slope केते अछि let it be m हमको given अछि एवं गोटे point given अछि x and y given अछि clear x1 y1 कौन कहूचे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको फाइंड आउट करियर अछि जेतोले हमको स्लोप आ गोटे पॉइंट गिवन अछि लेट इट बी स्लोप होची m एवं पॉइंट होची केते x1 y1 तो से जगह में स्लोप पॉइंट फार्मूला कोन जानथले स्लोप पॉइंट फार्मूला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन स्लोप एंड वन पॉइंट इज गिवन दैट इज y minus y1 व्हिच इक्वल्स टू m into x minus x1 तो बर्तमान m हमको गिवन अछि केते m गिवन अछि 2 upon 3 तो x1 y1 पॉइंट केते गिवन अछि 0,5 by 3 hence slope point formula में apply करनबा केते हिजबो y minus y1 that is 5 by 3 which equals to m into what is m here m is 2 by 3 whole into x minus x1 is 0 implies ताको सॉल्व करके केते हिजबो 3y minus 5 upon 3 which equals to 2x by 3 so 3 will be cancelled out that is 3y minus 5 which equals to 2x implies we can write 3y equals to 2x plus 5 hence option 3 is the right answer clear thank you everyone आज रो ही वीडियो रे हम डिस्कशन कले क्वेश्चन नंबर 20 रु 30 नेक्स्ट वीडियो रे 30 रु ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करिबा।